Hello to the other side. Welcome back to another episode of Speak Up Hesitations. You are watching and listening to your host, Mr. Myra Choti, and we are going to talk about personality. But what kind of personality? Do you also feel like that the way we walk and talk, the way we shake our hands, or the color combinations we choose to get ready, or the way we sit while talking and listening to others matters a lot? It does, but not for 24 hours, because you are not a professional for 24 hours. You are not meeting new people 24 hours. You cannot pretend visible professional behavior for 24 hours until it's required. Now, what does it mean? Stay the way you are. It means do not copy. Now, somebody wants to ask, what's wrong in copying? Excuse me. There's a difference in copying something and getting inspired of something. Now, somebody wants to ask, what's the difference between two? When you are inspired of something, it means that you are getting motivated, and motivation upskills you. And when you copy something, when you're copying something, that could be very, very fascinating. And fascination is a cage. Cage means किसी के माया जाल में फंसना. You can call it as fall into the trap of temptation. That's why I feel like these basic differences are extremely important in our day-to-day life. That can make us a good person, or I should say, an attentive person. Now let's switch on to English, language I'm most comfortable with. Okay, तो इस टॉपिक को उठाने का सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, समझते हैं, प्रोफेशनली हो, अनप्रोफेशनली हो, हमसे छोटे हो, बड़े हो, हमारी सिमिलर एज के हो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने एक्शन रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे डिफाइन करें, कि वो एक्शन रिएक्शंस एक्चुअली में हमारे हैं भी या नहीं है, क्योंकि हम बिना किसी नॉलेज के सभी कुछ कंज्यूम करते हैं, राइट? तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम उनके माया जाल में फंस रहे हैं या एक्चुअली उनसे कुछ सीख के खुद को अपस्किल कर रहे हैं या खुद को बेटर कर रहे हैं. जैसे हमारा कभी कभार ऑल ऑफ अ सडन मूड खराब हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन हम बहुत वीक फील करते हैं फिजिकली, राइट? ऑल ऑफ अ सडन बहुत स्ट्रेंथ फील करते हैं. तो ये सारे जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है. लेकिन हम कितने कॉन्शियस हैं इसके बारे में? बिकॉज द हॉर्मोन्स आर वर्किंग इनसाइड. कितने लोग ये बोलते होंगे कि यार आज ना हॉर्मोन्स की वजह से मेरा मूड खराब है, क्योंकि हमारा इंस्टेंटली ध्यान अपने हॉर्मोन्स पे जाता ही नहीं है. And we know it somehow, but we are not conscious about it all the time or the maximum time. Conscious होने का मतलब है we know it, we're aware of it, we are alert, we are awake. So whenever you're doing something or making any changes, make sure that's because of motivation, that's because of inspiration, and not because of fascination. So protect yourself, cushion yourself, help other people, guide other people, be a good person, do good things for people, and make sure you do not disguise humanity. See you in the another episode of Speak Up Hesitation. Subscribe for the latest and consume good here.